Hello, students. Very good morning to all of you. Dear students, today in the class we are going to read this poem, How Beautiful is the Rain. This is the poem in your grammatical section just after chapter number 19. Now, let's say, students, a very beautiful poem composed by H.W. Longfellow. H.W. Longfellow's poem is also related to natural scenes and beauty, and here in this poem he has described to the scene, the beauty scene of rain. Now, let's say, students, how beautiful is the rain? How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street. Here the poet S.W. Longfellow says that ये रेन ए बारिश कितना सुंदर है जब चारों तरफ डस्ट और हीट इतना अधिक बढ़ गया था और जो नैरो लेन है, जो संकरी रास्ते हैं, संकीर्ण रास्ते हैं, उन रास्तों में काफ़ी चौड़े, काफ़ी बृहद स्तर पर डस्ट और गर्मी बढ़ गई थी, लोगों के लिए राहत बिल्कुल नहीं था। उस समय ये बारिश आया, ये बारिश कितना सुंदर है। Once again he says, how beautiful is the rain, how beautiful is the rain, ये बारिश कितना सुंदर होता है। How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. And now in these lines the poet indicates to the clattering sound of roof when it rains, and he compares it to the ट्रैम्प ऑफ हुप्स मीन्स एनिमल्स के जो पैर के नीचे के जिसको हम खुर बोलते हैं, उससे जो कटकट की आवाज़ आती है, उसी तरह से जो टीन शेड पर गिरने वाली वर्षा की जो आवाज़ है उसका कंपैरिजन यहाँ पर पोएट ने किया है कि हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप, how it gushes and struggles out. And now after that he says that it gushes and struggles out, the rains flowing water, it comes, it struggles out just after a wide way, and from the throat of the overflowing spout, यहाँ ओवरफ्लोइंग स्पाउट से जो है, जो छत में निकलने के लिए जो पाइप्स लगी रहती है, नली, इसको टोटी भी बोल सकते हैं, तो कैसे आकर के उस पतले से टोटी से जो है बाहर पानी गिरती रहती है, काफ़ी तेज़ धार में आवाज़ करती हुई। हियर दिस सीन द साउंड्स हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द poet that how after long struggles from a wide street of wide areas, finally it comes to a narrow overflowing spouts just making a sound. Now here you see across the window pane it pours and pours. Now the poet says that when the winds blow very heavily, at that time the rain's spray also enters across the window pane, and it pours and pours means the air pours the sprays of rain inside of the window, and very swift and wide. At that time the sprays was very swift, and airs and rains area is also very wide. Sprays comes inside through the window, and outside of the window like a river down the gutter roars or like outside of the window when they notice to the rain, the roaring sound of the waters coming there, because the gutters are also flowing, they are also these gutters are also overflowing, so its flowing sounds are also roaring there. And so
everyone welcome to rain, everyone welcome to rain, because it provides them a lot of happiness there. Now the sick man from his chamber looks at the twisted brook. He can feel the cool breath of its little pool. Now, here in this stanza, the poet has described very beautifully to the sick man who are extremely suffering in their room with a very heavy heat, but now they also got some twist in their life as the weather is very cool. They realizes coolness in their life, and breathe of each little pool, and the little pool that are looking just through the window. When the sick man sees those little pools, means the storage of water along the roads, outside of the house, it indicates as the little pool. So to see all these scenes, the favored brain grows calm again. Means at that time the sick people feels relief, their minds, their body also realizes refreshness at that time, because after a long heat moment the weather has turned to cool moment, and now they feels calm down, they feels refreshness, and it is a very happy moment for all the sick people. And he breathes a blessing on the rain. And at that time, after seeing this each little pools, the cool water, the cool air, the sick people are also very happy, and now they are just blessing to the rain from the bottom of their heart, because it provides them a lot of relief, a lot of refreshness, coolness, and their favored brain also grows calm again. Okay. Now you see the last stanzas of this poem. From the neighboring school come the boys. The children now who are in the schools just after the rain, they also coming from the school. The school is also not so far from the houses. With more than their wanted noise. Wanted means होता है habitual or usual noise, and commotion means students होता है confusion. तो स्टूडेंट्स जो बच्चे जो स्कूल बगल के स्कूल से अभी निकले हुए हैं, छुट्टी हुई है, वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, ये बारिश हुई है, क्या है, पूल है कि ये तालाब है या फिर क्या है, और वो अपने वांटेड नॉइज, अपने हैबिचुअल, अपने यूजुअल नॉइज में वहाँ से शोर करते हुए काफ़ी कन्फ्यूजन में वहाँ से निकले हुए हैं, देख रहे हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट, और वेट स्ट्रीट को, गीली सड़कों को जब वो देख रहे हैं तो उनके अंदर भी एक हैप्पीनेस का फिर से संचार हो रहा है। एंड सेल देयर मिमिक फ्लेट्स, और वर्षा को देखते ही बच्चे स्कूल में तैयारी कर लिए थे, वे अपने पेपर बोट बना के रखे हुए थे, कागज़ की नाव बना कर रखे थे। एंड सेल देयर मिमिक फ्लेट्स टिल द ट्रीचरस पूल, उन छिछले तालाबों में आकर के, उन डिसेप्टिव, उन तालाबों में आकर के जो ट्रीचरस मतलब हो गया डिसेप्टिव, और यू कैन से नॉट टू बी ट्रस्टेड, जो चीज़ ट्रस्टेड ना हो, वहाँ आकर बच्चे अपने उस फ्लीट्स को आकर तैराना शुरू कर देते हैं। मीन्स जो वो फ्लीट्स, जो तात्पर्य यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे एक सिर्फ और सिर्फ वो एक उनका फुल ऑफ इमेजिनेशन वाला रहता है। मिमिक से मतलब यहाँ पर हो गया इमेजिनेशन, क्योंकि बच्चे देख करके उस पानी को अब लगते हैं उसमें अपने कल्पना से भरी हुई जहाज़ को, पेपर बोट्स को उसमें तैराना शुरू कर देते हैं। टिल द ट्रीचरस पूल, उस अनट्रस्टेड पूल में, क्योंकि
उनके पास तो चीज़ रहता नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम दे आर जस्ट हैविंग इमेजिनेशन टू सी दिस लिटिल पूल engulf them in its whirling and turbulent ocean. And engulf मीन्स होता है सैलोज ऑफ निगल लेना, अंदर absorb करना, और टर्बुलेंट मीन्स स्टूडेंट्स होता है डिस्टर्ब्ड ओशियन, एक ऐसा ओशियन जिसकी वेव्स काफ़ी वर्ल करती रहती, घूमती रहती हैं, लहरें काफ़ी उठती गिरती रहती हैं। उसी तरह से बच्चों का जो माइंड है वो भी फुल ऑफ इमेजिनेशन उस समय काफ़ी कंफ्यूज हो चुका है। बच्चे भी देखकर कंफ्यूज हैं कि छोटे तालाब हैं या क्या हैं, ये पानी भरी हुई है, उसको वो कैसे उसमें अपने फुल इमेजिनेटिव और फ्लीट्स को उसमें तैराने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये सारे बच्चों की एक इमेजिनेटिव वहाँ पे फोकस रहता है स्टूडेंट्स एट दैट टाइम व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। Okay, now this is a very beautiful poem by H.W. Longfellow. Okay, students, this is the explanation for this poem. I hope this is clear to all of you. Okay, you will see this video. Okay, goodbye everyone. Have a nice day.